Hello everyone, welcome back to UXIS. In our previous session, we explored the foundational pillars of Indian democracy, the constitutional bodies, those institutions which derive their legitimacy and structure directly from the Constitution of India. Now, these bodies such as Election Commission, UPSC, Finance Commission plays a pivotal role in maintaining the constitutional balance and ensuring the democratic governance. However, as the complexities of the governance have evolved over the period of time, so it has the need for a wider institutional framework that goes beyond the constitution itself. In today's session, we shift our focus towards extra constitutional bodies, those institutions which, while not explicitly mentioned in the Constitution of India, but have become indispensable to our administrative, advisory, and regulatory machinery. So let's understand what these bodies are, why they were created, and how they function alongside their constitutional counterparts to uphold the spirit of the good governance in India. As you can see in the screen, that today our focus is on the extra constitutional bodies, or particularly the bodies or the institutions which is not mentioned in the constitution. So extra constitution bodies are those bodies which are non-constitutional, but they do not derive their authority from the constitution, but they are established either through law, by the parliament, or the executive resolutions. For example, government of India थ्रू एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन भी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करती है. फॉर एग्जांपल नीति आयोग which replaced the planning commission of earlier established by the government. Now, what are the key features which we have to take look into the extra constitutional bodies? Like, as you know, that this is not mentioned in the constitution. They are created by the legislature or the executive actions. It can be statutory because any institutions which is came into existence through the particular law, either by the state legislature or the Sansad, that is the parliament. That is basically called the statutory institutions because it is derived their power from the statute which is passed in the legislature. And some is non-statutory bodies which came into existence via executive order of the government. Now, they assist in implementing the policies, monitoring the governance, or advising the government. If I talk about the types of the extra constitutional bodies, so there are the two types of constitutional bodies. One is the statutory bodies, and second one is the non-statutory bodies. Statutory bodies, as you can understand from the name itself, that it is created through the act of parliament. For example, the National Human Rights Commissions, which is created through the Act of Protection of the Human Rights Act of 1993. The National Commission for the Women is created through the National Commission for the Women Act of 1990. The National Green Tribunal is created by the National Green Tribunal Act of 2010. Central Vigilance Commission is created by the CVC Act of 2003. The same kind, Lokpal and Lokayukt Act, which is created after the Anna Andolan, that is 2013. Now, the National Investigation Agency, जिसे आप NIA के नाम से जानते हैं, that is created by the NIA Act 2008 after the 26/11 attack. Now, Central Information Commission, that is CIC, is created through the Right to Information Act of 2005. The Competition Commission of India, which is called in short CCI, is came into existence through the Act of Competition Act of 2002. And the National Commission for the Protection of the Child Rights, that is NCPCR, is created through the CPCR Act of 2005. So these are the basically act which provides the creation or the constitution of these particular institutions, which is very important in today's time and itself not
defining in the constitution, coming from the out of the constitution through the act. That's called the extra constitutional body of the statutory in nature. Now, non-statutory bodies, if I talk about, so you can see that Niti Aayog, which replaced the earlier planning commissions in 2015 after coming of the NDA government, that is led by the Prime Minister, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, and the National Development Council (NDC). So, though this is the body is inactive after coming the formation of the Niti Aayog, but it is not abolished permanently, but it is created earlier. Now, the Zonal Council, as you can see, it is created under the States Organization Act, but not the constitutional authorities also, not coming powers from a particular act, specifically act. It is defining their act from the reorganization, State Reorganization Act itself. Now, Economic Advisory Council to the Prime Minister is basically advisory body. ये भी executive body है, ये याद रखना. And then आता है Financial Stability and Development Council यानी कि FSTC that coordinates the financial sector regulators. ठीक है? Now start करेंगे हम National Human Rights Commission के साथ. What is National Human Rights Commission? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत सरकार. सो बेसिकली जो ये NHRC है, इसके लिए ये जब स्टैब्लिश किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को, और ये किसके तहत किया जा रहा है, तो इसका एक स्टैट्यूट था और उसे कहा जाता है प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993, which is amended in the 2006 itself. Now it is basically comes with the Paris principle, which is adopted first international workshop on the international or the national institution for the promotion of the protection of the human rights, which is held in the Paris in the 1991. Now it endured by the General Assembly of the United Nations also to regulation under 48 by 134 of the 20th December 1993. Why we are reading this? Because this is the exact para which is mentioned in the statute of the NHRC. And we have to look at least for once to understand what is the actual uh, word is mentioned there. Now, NHRC is the embodiment of the India's concern for the promotion and the protection of the human rights under Section 2, subclause 2 to 1D of the PHRC defines the human rights. What is the human rights? So, rights relating to the life, liberty, and equality, and the dignity of the individual guaranteed by the Constitution or embodied in the international covenants and enforceable by the courts in India. That is called the ह्यूमन राइट्स. और उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया था, जो कि पर्टिकुलरली इसी क्षेत्र में काम करता है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका कंपोजिशन कैसे होता है. सो कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अ मल्टी मेंबर बॉडी, यानी कि इसमें ये सिंगल मेंबर नहीं है, इसमें कई मेंबर्स हैं. चेयरपर्सन होंगे जो इसको हेड करेंगे और 5 मेंबर्स अदर्स. नाउ फुल टाइम मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो चेयरपर्सन शुड बी आइदर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. या तो वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे. ठीक है. दूसरा, मेंबर्स की बात करें तो सिटिंग और रिटायर, यहां पे याद रखना कि सिर्फ रिटायर्ड सीजेआई या फिर रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बन सकते हैं. लेकिन यहाँ पे जो कि ये भी अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, ये जज वाला. नाउ मेंबर्स इंक्लूड सिटिंग या फिर सिटिंग हो या फिर रिटायर्ड हो जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं. मेंबर्स उसमें भी ये इंक्लूड किए सकते हैं, यानी कि रिटायर्ड नहीं, सिटिंग जज भी वहां पे मेंबर एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं. Sitting or a retired Chief Justice of High Court and 3 individuals with at least one being a woman, यानी कि एक महिला होना जरूरी है, who possesses the knowledge with practical experience in the human rights, यानी कि इस क्षेत्र में उनके पास practical knowledge होना चाहिए, past experience होना चाहिए, और इस तरीके से ये लोग भी इसके members बनते हैं. Now 7 ex officio members भी होते हैं इसमें. एक्स ऑफिशियो मेंबर्स यानी कि वो व्यक्ति जो उस पद को धारण करते ही ऑटोमेटिकली उसका पार्ट बन जाता है, उसका मेंबर बन जाता है. और वो कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल द नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज, चेयरपर्सन जो है उनकी बात कर रहे हैं, जो भी ये चेयरपर्सन होंगे इन कमीशन के, वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाएंगे टू द NHRC. National Commission for the Scheduled Caste, National Commission for the Scheduled Tribes, National Commission for the Women, National Commission for the Backward Classes, and the National Commission for the Protection of the Child Rights. Also, the Chief Commissioner for the Person with Disabilities.
So these are the members who can become the automatically or ex officio member of the National Human Rights Commission. You have to remember this. Now, appointment and tenure की बात करें, so chairman and the members is of course appointed by the President of India on the recommendation of the six members committee, and the committee is consist of course the Prime Minister as a head, Speaker of the Lok Sabha, Deputy Chairman of the Rajya Sabha, and the leader of the opposition in both the houses of Parliament, for example, Lok Sabha and the Rajya Sabha. And the Union Home Minister is also part of this committee of the appointment of the National Human Rights Commission. Now, the chairman and the member hold the office for the term of 3 years, 3 साल के लिए, 3 years, ठीक है? And और या फिर उनकी एज जब तक 70 ना हो जाए, or until they reach the age of 70 years. So these are the important facts which we have to remember for the prelims point of view of the 2026. Now, what are the functions? What are the role as a National Human Rights Commission do? So it possesses the powers of the civil court. Civil court की power होती है इसके पास with the judicial proceedings also. It empowered to utilize the services of the central and the state government officials or investigations agencies for investigating the human rights violation. And it can also investigate the matters within 1 years of their occurrence. याद रखना 1 years of their occurrence के साथ ही ये matter देख सकते हैं. It can function also, its functions is also are primarily recommendatory in nature, like binding नहीं होता है. यानी कि इसके पास सिविल कोर्ट की पावर है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन इसकी जो रिकमेंडेशंस होंगी ये प्राइमरली रिकमेंड मतलब जो ये कोई भी डिसीजन लेगा ये बाइंडिंग नहीं होती गवर्नमेंट ना. सो यहीं पे ये इसको वीक कर देता है ये प्रोविजन. नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग. आपको मुझे बताना है कि इस समय नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन की चेयरपर्सन कौन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन कौन है. को ये पता होगा, हाल ही में ये न्यूज में भी थी. नाउ नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन is again the office. It is statutory body which is established under the 30 under Women Act, that is the National Commission for the Women Act 1990, and it was established in officially 31st of January 1992, after the 2 years of its enactment of this act. Now, the constitution, if I talk about, so it is headed by the chairman with the 5 members, including at least one SC/ST representation, and the member secretary. टेन्योर की बात करें, सो 3 years टर्म्स होता है इसका भी. एंड फंक्शंस की बात करें, सो इट इंक्लूड्स द रिव्यू ऑफ लॉ, सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ये ले सकता है, मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशंस, कंडक्टिंग अवेयरनेस कैंपेन्स, फंडिंग, लीगल एड वगैरह, ये सारी चीजें ये देखता है. कंप्लेंट टाइप्स की बात करें तो हैंडल्स 23 कैटेगरीज सच एज रेप, एसिड अटैक्स, trafficking, dowry, workplace harassment, cyber crimes, and domestic violence, and many more. So there are basically 23 more than categories are there to handle such kind of complaints by the Rashtriya Mahila Ayog. है ना? So we have to look into this. Now next आता है जो हमारा National Green Tribunal. This is also a statutory body or extra constitutional body, which is a specialized judicial body established under the National Green Tribunal Act of 2010. It is made because of extra environmental cases which was created a huge burden to the judicial system. So basically, government enacted one act, that is the National Green Tribunal Act, and made the NGT for particularly to disposal of the cases relating to the environmental protection and the conservation of the forest and other natural resources matter. As you can see, and you will feel good to know that India is one of the only few countries that has a specialized environmental tribunal like NGT. And it was established in accordance with the article number 21 of the Indian Constitution's right to life, which includes the right to healthy environment as well. As you can, you know that right to life is an umbrella term, and under this article, right to healthy environment is also a fundamental right of any particular human being lived in at least in India. So it is inspired by the India's obligation under the international conventions, such as, for example, the Stockholm Convention Conference
in 1972 and the Rio Declaration in 1992. As you can see, that India is a signatory and India has obligations under such international conventions. So that is also behind the that is also the reason, one of the reason behind the enacting this kind of act, that is the National Green Tribunal Act, which enacted which enabled the tribunals such as NGT for the particular disposal of the cases particularly related to the environmental protection. नाउ कंपोजिशन की बात करें तो रिटायर्ड जज चेयरमैन बन सकते हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, तो ये इसके चेयरपर्सन हो सकते हैं। जुडिशियल मेंबर्स की बात करें सो मस्ट बी जज होना चाहिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। एक्सपर्ट मैटर के तौर पे आप प्रोफेशनल और एक्सपर्टाइज हो सकते हैं एनवायरमेंटल साइंस की तरफ से। फॉर एग्जांपल आपको एनवायरमेंट की आप बहुत बड़े एक्सपर्टाइज आपको हासिल है, तो आप एज अ एक्सपर्ट मेंबर इसके पार्ट बन सकते हैं। एंड द चेयरपर्सन इज ऑफ कोर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट, इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मौजूदगी है। अब बेंचेस की बात करें तो इसकी प्रिंसिपल बेंच ऑफ कोर्स न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड है। जोनल बेंच में अगर बात करें तो भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, है ना, ये सारी इसकी जोनल बेंच। और सर्किट बेंच भी ऑपरेट करती है लेकिन वो रियली ओकेजन लेवल पे ओकेजनली ये ऑपरेट करती है, हमें याद रखना। Now, jurisdiction की बात करें तो NGT deals with the cases, that is civil cases related to environmental protection and the conservation of the natural resources, including the environment of the legal rights relating to the environment. For example, Water Prevention and Control of the Pollution Act of 1974, the Air Prevention and Control Pollution Act of 1981। ये याद रख लेना क्योंकि ये कभी कभी आपको कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन। Environment Protection Act of 1986, the Forest Conservation Act of 1980, and the Biological Diversity Act of 2002. So these are the cases which covers the jurisdiction of the NGT. Now, NGT aims to, इसका जो लक्ष्य है, लाइक 6 महीने में जब भी कोई केस फाइल होता है तो विद इन द 6 months इट हैज टू aim, not has to, its aim is to dispose the cases within the 6 months of the filing of the particular case. Power की बात करें तो NGT has original jurisdiction, appellate jurisdictions also, and the power of the civil court as well. Now, it can provide the relief, compensation, and the restitutions for the damages caused by the caused to the environment for by the particular entity. Now, it can impose the penalties and the fines also. ये याद रखना। Now, जजमेंट्स जो याद रखने वाले अभी कुछ केसेस रहे हैं, फॉर एग्जांपल आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन का केस रहा है यमुना फ्लड प्लेन्स डैमेजेस के लिए, उसमें अपना जजमेंट दिया था एनवायरमेंट के पक्ष में हमारे एनजीटी ने। एंड फिर वॉक्सवैगन जो डीजल एमिशन केस था उसके लिए कंपनसेशन फॉर द एयर पोल्यूशन भी निकाला था। वेस्ट मैनेजमेंट ऑर्डर, दिल्ली सॉलिड वेस्ट एंड लैंडफिल्स इश्यूज, दीज आर द few more important cases, judgments pronounced by the NGT we have to remember. As an example, you can quote in the mains paper when you write the particularly environment related questions, you can deal with these kind of examples. Now, नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, दैट इज CVC। हैव यू हर्ड दिस नेम? आई कैन अस्यूम यू आपने सुना ही होगा। सो दीज आर दी दिस इज दी एपेक्स एंटी करप्शन बॉडी इन इंडिया, यानी कि करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ एपेक्स बॉडी है, दैट इज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। And it was created to address governmental corruptions to ensure the integrity in the public administration. Of course, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रयास करे और बहुत सारे काम भी हो रहे हैं। नाउ, स्टैब्लिश की बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 1964 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द संथानम कमेटी। आपने ये नाम तो जरूर सुना होगा संथानम कमेटी का, अगर आप सच में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नाउ, इसका मतलब ही था कि प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन कैसे किया जाए, करप्शन कैसे रोका जाए, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि आपको सीवीसी नाम की एक संस्था बनानी चाहिए, दैट इज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि करप्शन को, गवर्नमेंटल करप्शन को कम करे, उसको उस इशू को कम एड्रेस करे और साथ में इंटीग्रिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर के आए। Of course, it is a statutory state body because it has a statutory status through the CVC Act of 2003. Now, टाइप ऑफ बॉडी की बात करें तो ये मैंने अभी बताया, वही सारी चीजें वही लिखा हुआ है। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर, पीएसयूज के ऊपर और अदर सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये इसका काम करता है। नाउ, स्टेट विजिलेंस कमीशन भी होती है, वो पर्टिकुलर स्टेट्स में काम करती है।
पोजीशन की बात करें तो लाइक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है और अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी and a committee constitute with prime minister as the chairman and the home minister and the leader of the opposition lok sabha for example अभी कौन है तो हमारे राहुल गांधी जी। नाउ विजिलेंस कमिश्नर अदर भी होते हैं, अप टू 2 हो सकते हैं। आपको ये बताना है अभी कि इस समय करंट सीवीसी कौन है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओ। नाउ फंक्शंस की बात करें, सो द फंक्शन ऑफ द सीवीसी इज टू इंक्वायर इनटू द करप्शन कंप्लेंट्स अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल। कोई भी हो अगर आप करते हो तो आप इसके जो सीवीसी है वहां पे कार्रवाई कर सकती है। इट सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ द सीबीआई इन द करप्शन केसेस आल्सो। इट एडवाइजेस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन द विजिलेंस मैटर। It maintains the integrity in the public services and also review the progress of the disciplinary cases related to the government employee, which is in a central government. नाउ पावर्स की बात करें, ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी जो है इसमें कैन आस्क द सीबीआई, कैन आस्क द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू इन्वेस्टिगेट allegations etc and recommendation actions against the guilty officials। रिकमेंड कर सकता है। हमको ये देखना है कि जो रिकमेंडेशन देगा ये एडवाइजरी इन नेचर है, नॉट बाइंडिंग, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे ही ये सारी पावर्स इसको खत्म कर देती है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी जो एडवाइजरी बॉडी होती है ये एडवाइजरी इन नेचर होती है, लाइक इनकी जो डिसीजंस होते हैं ये बाइंडिंग नहीं होते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे यही चीज, ये जो नॉन बाइंडिंग नेचर इनका जो है इस पूरे इंस्टीट्यूशन को वीक कर देता है। और इसमें क्या होता है कि आप जो विजिलेंस इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्शन होगा वो डायरेक्ट किया जा सकता है। सरप्राइज मतलब जैसे कोई मान लो आपने कंप्लेन किया तो आप वहां पे वो डायरेक्ट जाकर के भी उस तरीके से चेक कर सकते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें अभी हमने देखी। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी ही है और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कहलाएगा, दैट इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, दैट इज द सीआईसी। इट इज established in 2005 under the Right to Information Act of 2005. Of course, it is not a constitutional body, and the purpose of to making this to act as the final appellate authority under the RTI Act। ने आरटीआई का नाम जरूर सुना होगा और हो सकता है आप में से कई लोगों ने आरटीआई एक्ट का यूज भी किया होगा अपनी इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहीं से मिलती है, वो मतलब वो सारा विभाग यही देखते हैं, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन देखती है। Now it ensures, of course, the transparency and accountability in the functioning of the public authority, which is the aim of the RTI Act of 2005। कंपोजिशन की बात करें तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स भी होते हैं। Appointment, of course, President of India करते हैं on the recommendation of the committee, and committee is consisted of the Prime Minister as the chairman, where the Prime Minister is the member, of course, he is the ex officio chairman, and leader of the opposition of the Lok Sabha, Mr. Rahul Gandhi, and the Union Cabinet Minister nominated by the Prime Minister itself। टेनवर की बात करें तो एज पर द आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 में कर दिया गया था 3 years और अंटिल द 65 years ऑफ एज विच एवर द अर्लियर, एंड रीअपॉइंटमेंट इज नॉट अलाउड। ये याद रखना, द चेयर यहाँ पे जो इनका रीअपॉइंटमेंट है सीआईसी का ये नहीं हो सकता, ठीक। Powers and functions, of course, it hears the appeals and the complaints related to the RTI from the individual, and it also directs the public authority to provide the information, appoints the PIOs, that is the public information officer, takes the necessary actions for the complaints, for the compliance, for example. Now, power to summon, enforce, attendance, inspect the documents, order inquiry, like a civil court की power होती है limited matters में। Jurisdiction की बात करें तो सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्रीज, पीएसयूज, ये सारी चीजें। और स्टेट लेवल पे इट अपील्स गोज टू द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड नॉट द सीआईसी, ऑफ कोर्स, एज नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, दैट इज द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दैट इज द एनआईए। First, it is established in the 2008, that is the National Investigation Act 2008 was enacted after the 26/11 Mumbai terror attack, एंड उसके लिए ये बात में समझ में आई कि एक इन्वेस्टिगेशन टेररिज्म पर्टिकुलरली रिलेटेड एक वो होना चाहिए, एक हमारे पास एजेंसी होनी चाहिए जो पर्टिकुलरली इस तरीके की चीजों को देखती जाए। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने काउंटर टेररिज्म के लिए एक जो ये लॉ बनाया कि हम काउंटर टेररिज्म के लिए एक पर्टिकुलर एजेंसी क्रिएट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 passed due to that, and the objective of NIA is, of course, to combat the terrorism, insurgency, and the other national security threat. You can quote this NIA and the other things in the internal security, and
investigation to prosecute the offenses that threaten the sovereignty, security, integrity of India, and also develop the database of the terrorist organizations, operatives, and the financing outcomes of the outworks networks. What is actually they run. NIA Act also empowers to investigate to provide the NIA with a nationwide jurisdiction. For example, can operate without the prior state permission, which is a key federal feature of this. An amendment took place in the 2019, which is we have to remember. For example, it was the jurisdiction of the NIA was expanded. Now, NIA can investigate the crimes committed outside India also, if they involve the Indian citizens or any interest related to India. And also new offenses added under the jurisdiction, for example, the human trafficking, cyber terrorism, offenses related to the counterfeit currency, of course, jali note ki baat kar rahe hain, and explosive substances. So these are the some of the jurisdiction expansion was done in the amendment of 2019 by the central government. हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं। एंड डिवीजन की बात करें तो ऑपरेशंस एंड इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस, लीगल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें इसकी डिवीजन होती हैं। एंड रीजनल ऑफिस की बात करें तो ऑफ कोर्स हैदराबाद में है, मुंबई में है, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी, कोची, रायपुर एंड जम्मू। एनआईए की स्पेशल कोड भी होती है, लाइक इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द सेक्शन 11 एंड 22 ऑफ द एनआईए एक्ट। इट बेसिकली ट्राई ओनली एनआईए रिलेटेड ऑफेंसेस, क्योंकि ये एक स्पेशल कोर्ट है एनआईए की। एंड द जजेस आर अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, याद रखना हाई कोर्ट, नॉट द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। jurisdiction की बात करें तो ऑफ कोर्स अक्रॉस द इंडिया एंड अब्रॉड आल्सो, व्हिच इज डन बाय द 2019 अमेंडमेंट। एंड स्टेट परमिशन अब नहीं जरूरी है, यानी कि नॉट रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग ओवर द केसेस। एंड द डायरेक्ट कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एज ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर ये काम करता है। काउंटर टेरर फोकस है ऑफ कोर्स, बिकॉज इसका कोर मैंडेट है टू इन्वेस्टिगेट द टेरर एंड द नेशनल सिक्योरिटी क्राइम्स रिलेटेड थिंग्स।